So none of them can obtain from the Supreme Personality of Godhead, the deliverer from this material world, such mercy as received by Mother Yashoda. ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी जी भी इतना कृपा कृष्ण का प्राप्त नहीं करते जितना कृपा मदर यशोदा, माँ यशोदा को कृष्ण का कृपा मिला. Okay. Yeah. So this is, anyway, it's all part of this, what you see in the picture here. ये सब इस पिक्चर में हम देख सकते हैं. That there, look, there is Mother Yashoda tying Lord Krishna. यहाँ हम देखते हैं कि माँ यशोदा कृष्ण को बांध रही है. And Krishna cannot stop her. और कृष्ण माँ यशोदा को मना नहीं कर सकते. But because her love is so powerful, it overpowers Krishna. माँ यशोदा का प्रेम इतना ज्यादा गाढ़ा है कि उनका प्रेम कृष्ण को भी वश में कर लेता है. If you know the story, you would know that Krishna was being naughty. आपको अगर कथा पता होगा तो आप जानते हैं कि कृष्ण बहुत नटखट थे. Yeah, but when Krishna is naughty, it is nice. जब कृष्ण नटखट है होते हैं तो बहुत सुंदर लगता है. Bahut sundar. And Prabhupada said that when Krishna was a child, when Krishna was good, he was good. जब कृष्ण बहुत अच्छे थे, Krishna was good. When he was good, he was good. जब कृष्ण अच्छे थे तब अच्छे थे. And when Krishna was bad, he was good. जब कृष्ण कुछ गलत कार्य करते थे वो भी बहुत अच्छा था. You know, with most people, if they are bad, it's bad. जब साधारण लोग कुछ गलत कार्य करते तो गलत है. But with Krishna, it's completely different because Krishna is all good. लेकिन कृष्ण के साथ अलग है कि कृष्ण सर्वतः अच्छे हैं. Even when Krishna sometimes kills someone, it is good for that person. जब कृष्ण कभी किसी को मार डालते हैं वो भी उस व्यक्ति के लिए अच्छा होता है. Usually, if someone kills another person, it is very bad. It is the worst thing that can happen to that other person. जनरली कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारता है, जान से मार डालता है, तो दूसरे व्यक्ति के लिए वो खराब रहता है, सबसे खराब हो जाता है. You know, I can mention just briefly one little story. तो मैं एक छोटा सा कथा बताऊंगा. That you know that Krishna and Balaram, well, Balaram fought with Dhenukasura. हम देखते हैं कथा कृष्ण और बलराम का. बलराम जी धेनुकासुर से साथ युद्ध करते हैं. Dhenukasura was in the form of a donkey. धेनुकासुर एक गधे के रूप में था. What do you call that? Gede. गधा. Gada. गधा. I thought it was Gede. Okay. Gada. And Balaram killed Dhenukasura. बलराम जी ने गधे के रूप में जो धेनुकासुर था उसका वध किया. There is, you know, these pastimes get repeated from time to time. ये जो लीला है अलग अलग समय उसका दोबारा होता है ये लीला. Another time, different time, like a different kalpa, then Krishna killed Dhenukasura. ये अलग कल्प में कृष्ण ने धेनुकासुर को मारा था. And that time, that Dhenukasura, before he was Dhenukasura,
he was a devotee. तो उस कल्प में धेनुकासुर बनने के पहले वो एक भक्त था, But somehow he got some bad association and he became a demon. लेकिन उसको जब भक्त था तो गलत संग में फंस गया, इसलिए वो बाद में असुर बन गया. And then he attacked Krishna and Krishna fought with him. असुर बनने के बाद उसने कृष्ण के ऊपर हमला किया. उसके बाद कृष्ण का और उनका साथ युद्ध हुआ. And he's looking at Krishna and fighting with Krishna. And as he's seeing Krishna, he becomes purified. और कृष्ण को देखते देखते वो युद्ध कर रहा था. जैसे वो कृष्ण को देख रहा था और युद्ध कर रहा था तो शुद्ध हो रहा. So his devotee nature from before, it started coming up again. जैसे शुद्ध हुआ वैसे उसका जो पूर्व जन्मों का जो भक्ति है और भक्ति भावना है, उसका डिवोटी का भक्त का चेतना है, वापस विकसित हो गया. And he stops fighting with Krishna. He offers pranams to Krishna. और फिर वो क्या युद्ध बंद करता है और कृष्ण को दंडवत प्रणाम करता है. And he says to Krishna, Denakasura says, Krishna, please kill me. और वो धेनुकासुर कृष्ण को बोलते हैं कि हे कृष्ण, आप कृपा करके मुझे मार डालिए. I'm tired of being in this demon's body. मैं बहुत त्रस्त हो गया ये असुरी शरीर में रह के. Please kill me. कृपा करके मुझे मार डालिए. And Krishna says, now you're a devotee, I can't kill a devotee. कृष्ण लेकिन बोलते हैं, लेकिन अभी तुम भक्त बन गए, मैं भक्त को मार नहीं सकता. And Denakasura says, don't worry about it, just kill me. लेकिन धेनुकासुर बोलते हैं, आप उसका चिंता मत करो, आप जस्ट मुझे मार डालो. And Krishna says, no, लेकिन कृष्ण बोलते हैं, नहीं, I can't kill a devotee. मैं भक्त को मार नहीं सकता. So Denakasura was very upset. तो धेनुकासुर बहुत नाराज हो गए. So what to do? और वो सोचने अभी क्या करे. So Krishna turned his consciousness, his mind, back into a demoniac state of mind. तो कृष्ण ने फिर उनका जो चेतना है फिर से असुरी बना दिया. And Krishna killed him. और कृष्ण ने धेनुकासुर को मार डाला. And Denakasura was happy. और उसके बाद धेनुकासुर बहुत खुश हो गए. All right, anyway. But now, so yeah, Krishna here, Krishna was very naughty. कृष्ण यहाँ बहुत ही नटखट थे. He broke the pot, big pot of yogurt that Krishna and that Mother Yashoda was churning to make into butter. तो उन्होंने बहुत बड़ा जो मटका था दही का वो तोड़ दिया, जिसको माँ यशोदा मक्खन बनाने के लिए प्रयास कर रही थी. Right, I don't know if you ladies make your own butter at home. मुझे पता नहीं यहाँ के माता जी घर में अपना मक्खन बनाती है क्या. You know, I've made butter before. Good exercise. तो मैंने बचपन में मक्खन बनाया, ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज. So it's a long story. I won't go through the whole story. ये बहुत लंबा कथा है, मैं बड़े लंबा कथा में नहीं जाऊंगा. But Mother Yashoda had to, well, she was breastfeeding Krishna while making the butter. तो एक बार यशोदा कृष्ण को दूध पिला रही थी और साथ साथ वो मक्खन भी बना रहे थे. But then some milk in the kitchen was boiling over. She had to put Krishna down very quickly and save the milk. लेकिन उन्होंने देखा कि किचन में दूध उबल रहा था, तो वो देखा तो उनको कृष्ण को नीचे रख के वो दूध को बचाने के लिए जाना पड़ा. Because you know, you cannot waste milk. क्योंकि दूध हम बर्बाद नहीं कर सकते. Milk is liquid religiosity. दूध जो है वो लिक्विड तरल धर्म है. Okay. Right. So if you waste any milk, oh,
you will get some bad karma. अगर आप दूध को नाश करते हैं तो एक पाप कर्म मिल सकता है आपको, Bara pap. बड़ा पाप हो सकता है वो. So anyway, Krishna got upset that he was just put down like that. माँ यशोदा ने कृष्ण को ऐसा रख दिया उधर और चली गई, तो उससे कृष्ण बहुत नाराज हो गए. And he picked up a rock and smashed that clay pot she was churning the yogurt to butter in. तो कृष्ण बहुत गुस्से हो गए, उन्होंने एक पत्थर लिया और वो जो जहाँ से माँ मंथन कर रही थी उस मटके को मार के तोड़ दिया. And he took, because there was some butter formed, so he started taking some butter and eating it. तो वहाँ कुछ मक्खन बना हुआ था, तो कृष्ण वो थोड़ा मक्खन लेके खाने लगे. Right, and he ate a lot. और कृष्ण ने बहुत मक्खन खाया. And eventually he had enough. और बहुत खाने के बाद उनका बहुत खाया गया. So he was now feeding it to the monkeys. बाद में वो बंदरों को खिलाने लगे. And until the monkeys had enough. बाद में वो बंदरों का भी पेट भर गया. So there he's offering it to them. The monkeys are refusing. तो बंदर का पेट भर गया, तो जब कृष्ण बंदरों को मक्खन खिला रहे, बंदर बोल रहे अभी नहीं, बहुत हो गया. And Mother Yashoda returned. और तब माँ यशोदा जो है वापस आ गई. There's Krishna offering the monkeys here. Take it, take it. तो माँ यशोदा ने देखा कि कृष्ण बंदर लोगों को मक्खन खिला रहे हैं. And monkeys are no, no. और बंदर लोग बोल रहे नहीं नहीं. And Krishna turned to Mother Yashoda. और कृष्ण ने माँ यशोदा की तरफ देखा. And said, Mata, just see, your butter is so bad, even the monkeys won't eat it. तो वो माँ यशोदा की तरफ देखे और बोले, हे माँ, आपका ये मक्खन इतना गंदा है कि बंदर भी नहीं खाते हो. So then Mother Yashoda understood, I have to discipline this boy. तो माँ यशोदा को लगा कि मैं इसको थोड़ा शासन करना जरूरी है. Shasan. अनुशासन. Punish. Yeah, so I have to teach him a lesson that, you can't do like this. मुझे उसको सिखाना पड़ेगा कि ऐसा बदतमीजी नहीं कर सकते. Because she was afraid that if he grows up continuing to steal the butter just regularly, क्योंकि माँ को डर था कि अगर ये बच्चा ऐसा ही बड़ा होते रहा और मक्खन चोरी करते रहा, in the future he will become a criminal. बहुत बड़ा हो के बहुत बड़ा वो डाकू, अपराधी, तस्कर बन सकता है. Butter is makan, yeah. Yes. He will become the head of the makan mafia. वो अगर बड़े होके वो बड़ा मक्खन माफिया का हेड बन सकता है. And everyone will think, what sort of useless mother did he have? और सब लोग सोचेंगे इसका कितना माँ जो है useless माँ. Yes, so she felt, I have to correct him. तो यशोदा को लगा कि मुझे उसको शिक्षा देना है, उसको सबक सिखाना है, उसको सही करना है. Now he is stealing butter. आज वो मक्खन चुरा कर रहा है. In the future, he may steal motor cars. अगर बड़े होने के बाद वो बड़े-बड़े गाड़ियों को चुरा सकता है. Or maybe ox carts, buffalo carts. बाद में बैलगाड़ी या बफेलो गाड़ी चुरा सकता है वो. So, okay, she decided, I must catch him and I will tie him up. तो माँ ने ये किया, व्रत लिया कि मैं उसको पकड़ूंगी और उसको बांध दूंगी. And not that she would hit him. और
ऐसा नहीं कि उसको वो मारेगी, because that, according to Vedic culture, children are never struck, never hit. जनरली जो छोटे बच्चे हैं उनको मारते नहीं. Right, okay, so now she's got to catch him. तो माँ यशोदा कृष्ण को पकड़ने के लिए निकल पड़ी. But just look and see, she's kind of heavily built, middle-aged woman. तो माँ यशोदा की तरफ देख सकते हैं, वो थोड़ा मोटी है और मिडिल एज वुमन है. Total multi. थोड़ी मोटी है. The thing is that she and Nanda Maharaj, they only gave birth to Krishna when they were already a little older. कृष्ण का जन्म थोड़ा जब नंद और यशोदा एल्डरली थे तब हुआ था. Like in their 40s. या जब 40 के उम्र में ऐसा जब थे तब उनका जन्म हुआ था. Prabhupada makes the point that Nanda Maharaj has some grey hair. नंद महाराज के थोड़ा कुछ बाल पके थे. So anyway, so she's kind of heavily built, Todomoti, but look at him, he is very agile little child. तो माँ यशोदा थोड़ी मोटी है लेकिन कृष्ण थोड़े ये पतले हैं और बहुत एक्टिव है. He can just run, और वो बहुत दौड़ सकते हैं, नटखट है. But she can't do like that. लेकिन यशोदा वैसा नहीं कर सकती. So she tried to catch him, she couldn't catch him. यशोदा ने बहुत प्रयास किया कृष्ण को पकड़ने का, लेकिन पकड़ नहीं पाई. But as she is trying and failing, then her mood of motherly concern just increased and increased. जब माँ यशोदा ने बहुत प्रयास किया कृष्ण को पकड़ने का, लेकिन पकड़ नहीं पाई, तो उनका चिंता और बढ़ गया. वो जो माँ के मन में जो चिंता रहता है बच्चे को सुधारने का, वो चिंता और बढ़ गया. Yes, until her mood of love and concern just overflowed. तो इतना बढ़ गया कि वो एकदम ओवरफ्लो हो गया. Overflow है. Overflow क्या है? सीमा के पार हो गया. सीमा के पार हो गया. So when her mood of love overflowed on Krishna, he became overwhelmed. जब यशोदा का प्रेम कृष्ण के ऊपर आ गया, तो कृष्ण एकदम ओवरवेल्म हो गए. कृष्ण भावुक हो गए एकदम. And he could not stop her from catching him. और कृष्ण यशोदा को खुद को पकड़ने से रोक न सके. Then she had to tie him. That's what she's doing right now. उसके बाद माँ यशोदा कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही. But she got some rope. तो कृष्ण को बांधने के लिए यशोदा ने कुछ रस्सी ले लिया. But it was 2 fingers too short. लेकिन जो रस्सी बांध रही थी तब देखा कि रस्सी 2 उंगली कम हो रहा है. Okay, she got some more rope. तो उसके बाद फिर उन्होंने और रस्सी लाया. Now she's got that much rope. तो उनके पास और बड़ा रस्सी हो गया. It's 2 fingers too short. लेकिन वो भी रस्सी 2 उंगली कम हो गया. क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? But she just kept getting more and more and more rope. लेकिन माँ यशोदा ने और रस्सी लिया और रस्सी लिया और रस्सी लाया. 10 meters. 10 मीटर. But it wouldn't go around Krishna's waist. लेकिन वो कृष्ण के कमर को बांध न पाया. 2 fingers too short. वो हमेशा 2 उंगली कम देता था. And you must know that if 10 meters of rope will not go around your tummy, you have been eating too much prasadam. अगर 10 मीटर का जो रोप है आपके पेट के अराउंड नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब बहुत ही प्रसाद खा रहे हैं. Okay,
So she couldn't tie him. तो माँ यशोदा उनको पकड़ नहीं पाई। And again, her mood of motherly concern just rose and rose. और माँ यशोदा का माँ का प्रेम जो है और बढ़ते गया और बढ़ते गया। And again, it just overflowed. और फिर वो प्रेम सीमा के परे हो गया। And it just overflowed on Krishna. और वो प्रेम कृष्ण के पर गया। And then Krishna could not stop himself being tied. और फिर कृष्ण यशोदा को रोक न पाए उनको पालने से। And now she tied him. और उसके बाद यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया। So this is what we're talking about here, that the power of love. तो यहाँ हम ये चर्चा कर रहे हैं प्रेम की शक्ति। Prem ki shakti. Yeah, if you try and fight with Krishna, no chance. अगर हम कृष्ण से युद्ध करेंगे तो कुछ चांस नहीं है। But if you have love, and if your love reaches a certain point, you can conquer Krishna. लेकिन अगर आपके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है और एक प्रेम कृष्ण के प्रति बढ़ते जाएगा तो एक पॉइंट पे हम कृष्ण को के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। And that is the only way to control God. तो वही एक तरीका है कृष्ण को नियंत्रित करने का प्रेम से। Actually, one of our acharyas makes very interesting point about the two fingers. Two fingers. हमारे एक आचार्य हैं बहुत ही सुंदर व्याख्या करते ये दो उंगली कम रस्सी गिरने के बारे में। Do ungli. Look at my do ungli. Look, see? Well, one represents the effort of the devotee. तो एक उंगली जो है भक्त का प्रयास। There it is, you see. The other one represents the mercy of Krishna. दूसरा उंगली कृष्ण की कृपा Yeah. कहलाता है। Now look here, you see. This is my effort finger. तो दो उंगली है, एक है मेरा प्रयास This is my Krishna's mercy और दूसरा finger. जो है कृष्ण का कृपा। Look at your two fingers. You see, is it the same? The Krishna's mercy one is bigger, isn't it? तो कृष्ण का जो कृपा है ज्यादा है। So, of course, we have to try our best. हमको हमारा प्रयास करना बहुत जरूरी है। Try to please Krishna. कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। But still, Krishna's mercy is the main factor. फिर भी कृष्ण की कृपा है यही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। Factor है. Invented a new Hindi word. All right. Yeah, so there you go. That's a very nice example and extremely vivid example which we are focusing on this whole lunar month. तो ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है और इसके ऊपर हम पूरे ये महीने में ध्यान करते हैं। And this whole lesson for us, this lesson of how we can come through love to control Krishna, this is so important that we celebrate it for the entire month. ये कैसे कृष्ण को प्रेम से बांध सकते हैं ये शिक्षा इतना महत्वपूर्ण है कि हम पूरे महीने ये मनाते हैं। You know, other important things like Krishna Janmashtami and Ram Navami and Radha Astami and etc., we celebrate for one day. हम देखते हम कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, राधाष्टमी एक एक दिन के लिए मनाते हैं।
Sometimes we may do a program for a week, कभी कभी एक हफ्ता के लिए भी मना सकते हैं, like a Gita week before Janmashtami. या कभी कभी हम एक हफ्ता गीता वीक, गीता सप्ताह करते हैं, उसके बाद जन्माष्टमी मनाते हैं. But this we celebrate for the whole month. लेकिन ये जो दामोदर लीला है हम पूरे एक महीने के लिए मनाते हैं. We were just in the temple on Albert Road, अभी जस्ट इधर आने से पहले हम अल्बर्ट रोड मंदिर में गए थे, and they gave me a lamp for offering, which I offered to the same, Krishna with Yashoda. तो हम अल्बर्ट रोड राधा गोविंद मंदिर में गए थे, तो मुझे लैम्प दिया गया और मैंने यशोदा दामोदर को अर्पण किया. Because this lesson is so vital. It's practically the most vital lesson there is in Krishna consciousness. क्योंकि ये जो है शिक्षा है सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है हमारे कृष्ण भक्ति में. How to get the maximum mercy from the Lord. किस तरह हम कृष्ण का सबसे ज्यादा कृपा प्राप्त कर सकते हैं. Okay, so you can think about that. तो आप इसके बारे में थोड़ा सोच विचार कर सकते हैं. I want to refer to another situation. मैं और एक अलग दूसरा स्थिति बताना चाहता हूँ, which is here actually on my, I don't know if you can see it, on my bead bag. तो ये जो मेरे बीड बैग, जप का बैग है उसके ऊपर है. Look, there is Krishna as Madan Mohan. मेरे जपमाला के बैग के ऊपर मदन मोहन जी है. And here on the other side is, great devotee. तो दूसरे बाजू में एक महान भक्त है, Mahan Bhakta hai, Sanatan Goswami. सनातन गोस्वामी जी है. हरि बोल. Haribol. And you see, I don't know if you can see, but Sanatan Goswami is offering something to Madan Mohan. तो सनातन गोस्वामी मदन मोहन को कुछ अर्पण कर रहे हैं. Okay. So what he is offering to him, तो सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी को क्या अर्पण कर रहे हैं? it is something called bhakti. तो ये बाटी अर्पण कर रहे हैं. You know bhakti? आप बाटी जानते हैं? कितने लोग बाटी जानते हैं? It's flour and water mixed together round and put in fire. तो आटा और उसमें थोड़ा पानी और वो अग्नि पे डाल के थोड़ा मोटा. And then you take it out, and it's sort of like a type of bread. वो एक मोटी रोटी की तरह होता है. Yeah. Chota. मोटी रोटी. All right. So Sanatan Goswami was very poor. सनातन गोस्वामी भौतिक दृष्टि से बहुत ही गरीब थे. He had nothing. उनके पास कुछ भी नहीं था. Every day he would just go out and beg people to give him something to eat. तो वो रोज भिक्षा करते थे, मधुकरी करते थे. And sometimes all he would get would be a little flour. तो भिक्षा करके कभी-कभी उनको सिर्फ थोड़ा आटा मिलता था. And he'd mix it with some Yamuna water. तो आटा में वो थोड़ा यमुना का जल डालते थे. Put it in the fire. और वो अग्नि में डालते थे. Take it out. और उसको निकालते थे. Break off the black crust. और वो काला-काला जो ऊपर का भाग है वो निकालते थे. And you have this little bready sort of thing. और एक छोटा सा वो जो बाटी बनता था. And he would offer it. और वो बाटी मदन मोहन को अर्पण कर देते. His deity of Madan Mohan. तो ये बाटी मदन मोहन जी को अर्पण करते थे. And it is really like poor man's food.
ये एक बहुत ही गरीब व्यक्ति का खाना है, Just flour and water. जस्ट आटा और पानी, No salt even. उसमें नमक भी नहीं रहता था. So, Madan Mohan would speak to Sanatana Goswami. तो मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी से बात करते थे. One time, Sanatana offered him a couple of butties. तो एक बार सनातन गोस्वामी ने कुछ बाटी अर्पण किया भगवान मदन मोहन जी को. And Madan Mohan picked one up. मदन मोहन जी ने एक ले लिया. And he sort of checked it out. और मदन मोहन ने देख लिया कैसा है. Yeah. And he took a little nibble. तो और उन्होंने एक थोड़ा Little bit. लिटिल बिट खा लिया. And he said, Sanatan, can't I at least have a little salt in my butty? तो और फिर मदन मोहन जी ने बोला, हे सनातन, उसमें थोड़ा नमक डाल सकते हैं क्या मेरे लिए तुम? And Sanatan said, listen, my Lord. तो सनातन बोले, हे भगवान, ये सुनो, This is all I've got. ये इतना ही मेरे पास है. I cannot do any better. तो इससे और ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता. So Sanatan told him, listen, if this is not good enough for you, I will take you back to that family in Mathura where I got you from, because they'll feed you with nice food. तो सनातन गोस्वामी बोले कि आप मेरे को मथुरा के जो ब्राह्मण है उन्होंने वहां से आए आप, तो आपको अगर लग रहा है ये खाना आपके लिए पसंद नहीं, मैं वापस आपको वो फैमिली में दे जाता हूँ, क्योंकि वो फैमिली आपको बहुत अच्छी तरह खिला सकता है, आपको जो चाहिए वो दे सकता है आपको. You can have deep fried cauliflower with paneer with puris. आप उधर उनके घर में डीप फ्राई करके वो जो कॉलीफ्लावर है, पनीर है, सब कुछ आपको मिल सकता है. पूरी भी मिल सकता है. Yeah. But Madan Mohan said, no. I will take my butty with no salt, but I just want to stay with you. लेकिन सो मदन मोहन बोले, नहीं, मैं उनके घर नहीं जाना चाहता, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, बाटी खाऊंगा मैं बिना नमक का. Because Sanatan had so much love for Madan Mohan. क्योंकि सनातन गोस्वामी को मदन मोहन से बहुत प्रेम था. So this is another example of the power of love. ये अलग और एक उदाहरण है प्रेम का, कैसे सनातन गोस्वामी का जो प्रेम है भगवान को पकड़ के रखा. With Mother Yashoda, at other times, she would instruct Krishna that your father is coming home, bring his cushion. तो दूसरी जगह हम देखते हैं माँ यशोदा कृष्ण को आदेश देते हैं कि तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, पिताजी के लिए आसन के लिए कुशन लेके आना. Right. And because Nanda Maharaj has big cushion. तो नंद महाराज का बहुत बड़ा आसन था, king size. राजा की तरह. So little Krishna, he would take the cushion and try to pull it, but it's too heavy. तो छोटे कृष्ण थे, तो जो आसन था नंद महाराज का वो उठाने का प्रयास करते थे, लेकिन उठा नहीं पाते थे क्योंकि आसन बहुत ही ज्यादा वजन का था और कृष्ण में इतना शक्ति नहीं था छोटे होने के कारण. So yes, this is Krishna. He because of the love of Yashoda, the love of Nanda Maharaj, he would serve them. हम देखते एक कृष्ण है, यशोदा का प्रेम कारण, नंद महाराज के प्रेम कारण कृष्ण उनकी सेवा करते थे. And let me just tell you one other story. तो मैं और एक कथा बताना चाहता हूँ. Right. It's in Chaitanya Charitamrita. वो चैतन्य चरितामृत से है. One rainy season, when Lord Chaitanya was in South India, he stayed the whole 3 or 4 months with a devotee family
in Sri Rangam. जब साउथ इंडिया में श्री चैतन्य महाप्रभु यात्रा के लिए गए थे तो चातुर्मास में साउथ इंडिया में महाप्रभु एक श्रीरंगम में एक ब्राह्मण के घर में रुके. Every day he would go and have darshan of the deity of Ranganath. तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रोज रंगनाथ जी का दर्शन करते थे. A very beautiful deity. बहुत ही सुंदर विग्रह है. Have you been there? आप कितने लोग श्रीरंगम गए हैं? Ek, do, team. Anyway, yeah. So Lord Chaitanya goes a few times every day. तो चैतन्य महाप्रभु कुछ एक दिन में 2-4 बार जाते थे दर्शन करने के लिए. And he noticed that on one side, just by the entrance to the temple room, there was a devotee with a book. तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि श्रीरंगम में रंगनाथ के मंदिर में एक कोने में एक व्यक्ति था, एक भक्त था, कुछ किताब लेके बैठा था. And Lord Chaitanya, when he comes in, he goes out. This devotee is looking at the book, and sometimes tears of ecstasy are coming from his eyes. तो चैतन्य महाप्रभु दर्शन के लिए आते थे, जाते थे, देखते थे कि ये व्यक्ति हाथ में किताब लेके बैठे हैं और बहुत बार वो आंखों से बहुत अश्रु गिर रहे, प्रेम के अश्रु, भाव के अश्रु. And Lord Chaitanya thought, this is very nice. तो चैतन्य महाप्रभु को लगा है बहुत ही अच्छा है. But then sometimes he saw some other local devotee would come and speak with that devotee with the book. और महाप्रभु ने कभी-कभी देखा कि लोकल कोई भक्त लोग आते थे और वो जो भक्त था जो किताब लेके बैठता था उधर, उससे कुछ चर्चा करते थे. And would sort of joke with him and like mock him, make fun of him, like this devotee with the book is doing something stupid. तो लोकल लोग जब आते थे तो मजाक करते थे वो जो भक्त था जो किताब लेके बैठा था उधर. Right, so Lord Chaitanya is wondering what is going on here. तो चैतन्य महाप्रभु सोच रहे थे ये क्या चल रहा है इधर. So one day he went and spoke to that devotee. तो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु वो जो किताब लेके बैठते थे भक्त उनके पास गए और उनसे चर्चा की. And he said, you know, I watch you and I see these other local devotees come and they sort of laugh at you like you're doing something stupid. Why is that? तो उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस भक्त से पूछा कि मैं देखता हूँ इधर आजू बाजू के जो लोग हैं लोकल लोग हैं वो आपको देख के मजाक करते हैं, क्यों मजाक करते हैं आपका? And the devotee said, you know, the thing is, I am illiterate and they know it. तो वो भक्त ने बताया कि एक्चुअली मैं जो है अनपढ़ हूँ, मैं कुछ लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता और ये लोकल लोग जानते हैं. My Guru Maharaj told me, read Bhagavad Gita every day. लेकिन मेरे गुरु महाराज ने मुझे बोला है कि रोज भगवद गीता पढ़ो. So I sit here with Bhagavad Gita every day. इसलिए मैं इधर बैठता हूँ रोज भगवद गीता लेके. But I can't read it. लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता. So they come and they say, oh, Panditji, what verse are you reading? तो लोकल लोग आके मेरा मजाक करते हैं, बोलते हो पंडित जी आप कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं? And I don't know. और मैं तो पढ़ नहीं सकता, मुझे पता नहीं. So they laugh at me. तो सब लोग मेरा मजाक करते हैं, हंसते हैं मेरे ऊपर. And Lord Chaitanya said, but other times I see you sitting there with the Bhagavad Gita and tears of spiritual ecstasy are coming from your eyes. लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले मैं बहुत बार देखता हूँ कि आप किताब लेके बैठे हैं और आपके आंसू से प्रेम के आंसू आ रहे हैं. So what is going on? तो क्या चल रहा है? So devotee said that, you know, sometimes I have my Bhagavad Gita, sometimes I look at the cover and I look at the picture. तो मैं जब भगवद गीता लेता हूँ तो मैं भगवद गीता के कवर पे देखता हूँ और कवर में जो पिक्चर है वो देखता हूँ मैं. I see in the picture there is Lord Krishna driving the chariot of his devotee Arjuna. तो पिक्चर में मैं देखता हूँ कैसे कृष्ण भगवान अर्जुन उनके जो भक्त है उनका रथ चला रहे हैं. And I think
how merciful is Krishna to his devotee. और मैं सोचता हूँ कितने कृपालु है कृष्ण अपने भक्तों के प्रति। Arjuna is the devotee. He should be driving the chariot for, Arjuna is the devotee. He should be driving the chariot for Krishna. एक्चुअली अर्जुन जो भक्त है और कृष्ण भगवान है, तो अर्जुन को कृष्ण का रथ चलाना चाहिए। But Krishna is driving the chariot for Arjuna. लेकिन हम देखते हैं इधर कृष्ण जो है अर्जुन का रथ चला रहे हैं। And driving a chariot, it's just an ordinary, it's not like being the managing director, some important job. तो गाड़ी चलाना एक बहुत बड़ा कार्य नहीं है, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी या कुछ सीईओ कंपनी का, ऐसा नहीं। एक ड्राइविंग चलाना एक तो साधारण काम है। So I look at this and I think, how kind is Krishna to his devotee? And I just can't stop myself. I just cry. तो जब मैं ये सोचता हूँ कि कितना कृष्ण कृपालु है अपने भक्तों के प्रति, ये सोच के मैं खुद को रोक नहीं पाता और मेरे आंखों में आंसू आते हैं। And Lord Chaitanya said, actually, you may never have read Bhagavad Gita, but you have understood Bhagavad Gita. तो श्री चैतन्य महाप्रभु उस भक्त को बोले कि आपने आपकी जिंदगी में कभी भगवद गीता पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आप भगवद गीता समझ गए हो। In fact, you are the authority on Bhagavad Gita. आप भगवद गीता के अधिकारी हो। So yeah, this is another example that Krishna, because of the affection, the love of Arjuna, he's doing this sort of ordinary thing to please his devotee. हम देखते हैं कृष्ण, क्योंकि अर्जुन को कृष्ण के प्रति प्रेम था, इसलिए कृष्ण भी प्रेम से अर्जुन का ये साधारण सा सेवा भी कर रहे हैं। So we should try and learn from these different examples, different leelas. तो हमको ये अलग-अलग उदाहरण से, अलग-अलग भगवान की लीलाओं से ये सबक सीखना चाहिए। And we should all try and serve Krishna and please Krishna. तो हमको हमेशा कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। And when he sees that you're trying your best, और जब कृष्ण देखेंगे कि हम हमारा सबसे अच्छा प्रयास कर रहे हैं, just like our 2 fingers example, जैसे कि हमारा ये 2 उंगली का उदाहरण है, he will give his mercy, which will be something very amazing. तो कृष्ण उनका कृपा हमको देंगे जो बहुत ही अद्भुत रहेगा। Just like take Prabhupada as an example. तो देखो प्रभुपाद का उदाहरण। Prabhupada was from Calcutta. प्रभुपाद कलकत्ता से थे। So you're all Calcutta people. आप सब कलकत्ता वासी हो। You can follow in his footsteps. आप प्रभुपाद के पदचिन्हों पे चल सकते हैं। He went to the Western world. प्रभुपाद अमेरिका में गए। He had practically nothing. प्रभुपाद के पास कुछ भी नहीं था। But he was just preaching Krishna consciousness. लेकिन वो हमेशा कृष्ण का वाणी प्रचार करते थे। Preaching from the heart. हृदय से प्रचार करते थे। And all these young men and young ladies who saw Prabhupada, they were just captivated by him. और नवयुवक और नवयुवती जिन्होंने प्रभुपाद को देखा तो प्रभुपाद से बहुत प्रभावित हो गए। And thousands of them joined him and just gave up everything else. और हजारों नवयुवक नवयुवतियां प्रभुपाद को ज्वाइन किए और पूरा जीवन प्रभुपाद को समर्पण किए। And by the time he left this world, 1977, then he had, many thousands of followers. जब 1977 में प्रभुपाद इस जगत से गुजर गए, तब प्रभुपाद जी को अनेक हजारों शिष्य थे। He had well over 100 temples. और श्रील प्रभुपाद ने 100 के ऊपर मंदिर बनाए थे।
And, the value of them just financially, because some of them were pretty substantial, is millions and millions of dollars. तो और जस्ट सब मंदिरों की कीमत करोड़ों करोड़ों डॉलर था. Like that, yeah. So, and he started when he was 70. और प्रभुपाद जी ने उनका प्रचार, उनका जो आंदोलन है शुरू किया जब उनका उम्र था 70. I don't know if you know anyone who started a business at 70 and became so successful. आप कोई ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने अपना बिजनेस 70 उम्र में शुरू किया और बहुत सक्सेसफुल हो गए? So anyway, we can follow in the footsteps of Srila Prabhupada. तो हम श्रील प्रभुपाद जी के पत्नियों पे चल सकते हैं. Kolkata Vasis. कलकत्ता वासिस. And we can start by chanting, really trying to chant nicely. तो हम भगवान का जो नाम जप है बहुत अच्छी तरह करना चाहिए. उससे हमारा भक्ति हम शुरू कर सकते हैं. When we chant, we should put our heart into it. हम जब भगवान का नाम जप करते हैं तो उसमें हमारा हृदय पूर्वक जप करने का प्रयास करना चाहिए. And really try to chant the mantra nicely. और जो मंत्र है प्रॉपरली मंत्र बोलना चाहिए. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ये मंत्र का जो उच्चारण है अच्छी तरह करना चाहिए. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Right. Sometimes if devotees are in a hurry, they want to finish their chanting for the day. कभी-कभी हम देखते हैं भक्त लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, वो उस दिन का माला कंप्लीट करना चाहते हैं. They don't chant so nicely. वो बहुत अच्छी तरह जप नहीं करते. Prabhupada once heard, he sort of caught a devotee chanting, I'll demonstrate. तो एक बार श्रील प्रभुपाद ने एक भक्त को पकड़ा जो जप कर रहे थे. कैसे जप कर रहे थे मैं थोड़ा दिखाऊंगा. Snick snick ram ram gay gay gay, snick snick ram ram gay gay gay, snick snick ram ram gay gay. Prabhupada heard him and Prabhupada stopped him. तो ऐसे वो जप कर रहे थे भक्त, तो प्रभुपाद ने वो सुना और उनको पकड़ा. And Prabhupada said, what is the snake? प्रभुपाद ने पूछा ये स्नेक क्या है? Are you trying to get the mercy of snake? तो आप क्या सांप का कृपा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो? Do you want to go to snake loka? आप क्या सर्पलोक में जाना चाहते हैं क्या? So we have to actually chant from the heart and chant nicely. Actually हमको हृदय से जप करना चाहिए, बहुत अच्छी तरह जप करना चाहिए. And if we do like that, then Krishna will hear us, he will relish it, and he will respond. तो कृष्ण वो सुनेंगे और आस्वादन करेंगे और हमसे आदान प्रदान करेंगे. Just like last thing, let me just say one last thing. तो मैं और एक आखिरी का एक बात बोलना चाहूँगा. Krishna's makhan chor. कृष्ण मक्खन चोर है. Why? क्यों कृष्ण मक्खन चोर है? Is it just he likes to eat butter? क्या उनको सिर्फ मक्खन खाना अच्छा लगता है इसलिए मक्खन चोर है? What, like just the taste of the butter? क्या उनको मक्खन का वो जो स्वाद है बहुत पसंद है? Like we all have our favorite prasadam. हम सबको कुछ ना कुछ अलग अलग व्यंजन प्रसाद का अच्छा लगता है. What's your favorite prasadam? आपका फेवरेट प्रसाद क्या है? Palak paneer. पालक पनीर. What's your favorite prasadam? Sweet rice. Sweet rice. Sweet rice. Okay. And one of the ladies, what's your favorite prasadam? Khichdi. Khichdi. Okay, that's interesting. Oh, that's good.
Anyway, anyone here like pizza? Okay. Some people, some devotees say that they think that pizza is not really a proper thing for a devotee to eat. Because it's foreign, It's not traditional. तो कोई कोई लोग सोचता है कि पिज्ज़ा ये सही ठीक नहीं खाने के लिए, क्योंकि वो विदेश से है और ट्रेडिशनल नहीं है. You understand? Bharatiya Nehe. But actually it is quite authentic. लेकिन वो बहुत ही प्रामाणिक है. Because you know what pizza is? आप पिज्ज़ा जानते हैं क्या है? Do you? बात नहीं. Pizza is a self-realized roti. पिज्ज़ा क्या है? ये आत्म साक्षात्कारी रोटी है. So anyway, so it's not that Krishna just likes the taste of it. ऐसा नहीं कि कृष्ण को सिर्फ स्वाद पसंद है. Because Krishna, all that Krishna's interested in is love. कृष्ण जो इंटरेस्टेड है, कृष्ण जो आस्वादन करते हैं प्रेम. So the thing is, the cows, they produce the milk. जो गैया हैं दूध देती हैं. And they're always thinking, we want Krishna to get our milk. तो गैया सोचते हैं कि हमारा जो दूध है कृष्ण पी लें. And whatever's made from our milk, we want Krishna to get this. तो गैयों का इच्छा है कि उनके दूध से बना हुआ मक्खन कृष्ण दे. Then the ladies, they're the ones who milk the cows and they take all the milk and then some of it they transform into other things. तो ये जो स्त्रियां हैं वृंदावन के, वो दूध लेते हैं, उससे अलग अलग व्यंजन बनाते हैं. Right, yeah, like they make yogurt out of the milk. उससे दही बनाते हैं. Then they make butter out of the मक्खन yogurt. बनाते हैं. And then they make different milk sweets. और उससे अलग अलग दूध के स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं. They make sandesh and संदेश बनाते हैं. and what's my favorite one? Chum chum. संदेश, बर्फी, चमचम. So, okay, but the ladies, they're just thinking, we want Krishna to get all these things we're making. तो ये जो सब प्रज के स्त्रियां हैं सोचते हैं कि हम ये सब जब अलग अलग व्यंजन बनाते हैं, वो हम चाहते कृष्ण स्वाद करें. So all their love goes into those different milk products. तो ये स्त्रियों का जो प्रेम है वो सब दूध के व्यंजनों में जाता है. And the cow's love goes Yeah. into the milk. गायों का प्रेम वो उसमें जाता है दूध में. And so all those milk products are just filled with the love of the cows and the lady. तो ये जो अलग अलग व्यंजन है दूध के, वो पूरा गायों के प्रेम से और स्त्रियों के प्रेम से भरा हुआ है. And particularly the butter. और especially वो जो मक्खन है. Especially. खास करके. Because it's hard work making the butter. It's really hard work. मक्खन बनाने में बहुत शक्ति लगता है. बहुत मेहनत करना पड़ता है. I made butter just a few times and I tell you, I was tired at the end. तो मैं कुछ समय मक्खन बनाया, लेकिन बहुत थक गया. वो मक्खन बनाने में इतना शक्ति लगता है. So therefore there is an extra amount of love in the butter. इसलिए वो मक्खन में और ज़्यादा प्रेम है. Therefore Krishna, he likes any of those products, but particularly he wants to get the butter.
कृष्ण को सारे व्यंजन पसंद है, लेकिन खास करके उनको मक्खन बहुत पसंद है, because there's just so much love in the butter. क्योंकि उसमें इतना सा प्रेम है. And this is why Krishna is Makhanchor. इसलिए कृष्ण है माखन चोर. Yeah. Which is, probably a different reason from why your Palak Paneer chore, no, anyway, Palak Paneer person, or but generally with us it's just because, we like the taste. हमको अगर कुछ अच्छा लगता है तो हम सिर्फ टेस्ट देखते हैं और वो हमको अच्छा लगता है. But with Krishna, he's after the love. लेकिन कृष्ण प्रेम के पीछे है. And the ladies want him to have the butter. और सब स्त्रियां चाहते हैं कि कृष्ण उनका मक्खन खाए. But why do they not just give it? Here, Krishna, take the butter. तो अगर सब स्त्रियां व्रज के कृष्ण को मक्खन खिलाना चाहते हैं तो क्यों ना वो डायरेक्टली उनको दे. So the reason is that the husbands, they have to take the dairy products and trade them for other things. क्योंकि उनके जो पति वो सब दूध के जो व्यंजन है वो बाहर जाके बिक्री करते हैं. Right, like vegetables, they don't grow vegetables. They trade their dairy products and they get vegetables. ये जो ब्रज के लोग हैं वो क्या करते हैं, दूध के व्यंजन देते हैं और सब्जियां वगैरह खरीदते हैं. Because they don't grow their vegetables. हाँ, क्योंकि वो सब्जियां उगाते नहीं, तो दूध बेचते हैं, दूध के व्यंजन बेचते हैं और सब्जी खरीदते हैं. So if, the problem is the husbands are concerned if Krishna takes too much butter, we won't be able to trade it for enough vegetables and life will be difficult. तो जो पति लोग सोचते हैं कृष्ण ज्यादा मक्खन खा लेंगे तो हम बिक नहीं पाएंगे और हमको इतना सब्जियां वगैरह खरीद नहीं पाएंगे हम. So therefore Krishna steals the butter. इसलिए कृष्ण मक्खन चुराते हैं. Because he feels I've got to get the butter. क्योंकि वो सोचते हैं कि मुझे मक्खन खाना है. Because there's so much love in it. क्योंकि उसमें इतना प्रेम है. Yeah, he's addicted to love. कृष्ण प्रेम के भूखे हैं, एडिक्टेड, एडिक्शन. Anyway, I think you understand. You understand. आसक्त है. You understand enough English to understand what I'm saying. So, yeah. And even the ladies would like to give him the butter, but they can't because their husbands will come and complain. तो सारे स्त्रियां कृष्ण को बहुत मक्खन खिलाना चाहते हैं, लेकिन खिला नहीं सकते क्योंकि उनके जो पति है उनको डांटेंगे उसके लिए. And they might have divorce. और शायद उससे डिवोर्स हो सकता है. तलाक. So therefore Krishna, to solve the problem, he steals the butter. तो कृष्ण ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चोरी कर लेते हैं. So the ladies, when the husbands come back in the evening, the husbands say, where's the butter? तो शाम को जब पति आते हैं तो पूछते हैं मक्खन किधर है? And the ladies say, Krishna stole it. और स्त्रियां बोलती हैं कृष्ण ने चुरा लिया. And they're very happy, but they make it sound like, oh, Krishna stole it, it's bad. तो वो तो अंदर से हृदय से बहुत खुश है, लेकिन वो दिखाते हैं कि बहुत दुख है और सोचते हैं कि बहुत गलत हो गया, चोरी हो गया. Yeah. So this is why Krishna is Makhanchor. इसलिए कृष्ण है मक्खन चोर. It's not just because he likes the khichdi. इसलिए नहीं कि उनको खिचड़ी अच्छा लगता है, स्वाद अच्छा लगता है, लेकिन उसमें बहुत प्रेम है. Yeah. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Srila Prabhupada ki jai. किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. लेकिन आज संकोच. Krishna or comment. Yes. किसी का कोई प्रश्न है तो
Maharaj, the Dhenukasura example that you gave, that he became a devotee and then Krishna, is that in the Bhagavatam? No, that is, what's it in? One of the brothers, I think Brahmanda Purana, or it's one of the Brahma Puranas, yeah, which I have a copy of. Okay. Yes, प्रश्न आपको? Maharaj, I have one question. Just one thing I wanted to know. Would you like to share some of your experience throughout your life? That what most experience you have learned, and would you like to share with us throughout your life from childhood till now? So, महाराज आपका बचपन से अभी तक का कुछ अनुभव शेयर करना चाहेंगे? Well, one thing I think it's the most important thing is, anyway, yeah, it's something special. Was in 1972 when I was in university in Auckland, New Zealand. मैं 1972 में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था ऑकलैंड न्यूजीलैंड में. And in April, one morning in April 1972, I was walking through the university grounds. तो अप्रैल में एक सुबह मैं यूनिवर्सिटी से जा रहा था. And I heard the sound coming from my right-hand side, a little way away, and it sounded sort of like little bells ringing. तो मेरे दाहिने दिशा से कुछ आवाज आने लगा, जैसे कोई मानो कुछ बेल्स बज रहे हैं. So I looked across to the right. तो मैंने दाहिने देखा. And who should I see but Srila Prabhupada? तो मैंने राइट दाहिने देखा तो देखा श्रील प्रभुपाद को. हरि बोल. So Prabhupada was the first devotee I saw. तो प्रभुपाद एक पहले भक्त थे मैंने मेरे जिंदगी में देखा. Yeah, because I'm a very difficult person. मैं बहुत ही कठिन व्यक्ति हूँ. And therefore only, the greatest devotee could really influence me. इसलिए बहुत ही महान भक्त हूँ, मुझे मेरे ऊपर प्रभाव डाल पड़े. So anyway, Prabhupada's walking almost straight towards me. प्रभुपाद जी सीधा मेरे तरफ चल के आ रहे थे. And on either side, one here and one there, just not more than a meter away, on either side was a young lady. तो दोनों साइड नवयुवती थी. They were in saris because they were devotees. और वो साड़ी में थे. They're sort of in their 20s, something वो like 20 that. के आसपास उम्र में रहेगा And उनका. they're dancing very gracefully. और वो नाच रहे थे And बहुत सुंदर तरीके से. each one of them had a basket full of red rose petals. और उनके हाथ में गुलाब के फूलों का बास्केट था. And each one of them, as they're dancing next to Prabhupada, they're throwing rose petals just in front of his feet. और वो नाच रहे थे और दोनों जो है प्रभुपाद के चरण कमल के ऊपर गुलाब के फूलों के पत्ते डाल रहे थे. And I'd never seen anything like that before. और मैंने ऐसा कभी जिंदगी में सीन देखा नहीं था. So this a thought just popped into my mind. और मेरे मन में ये विचार आया. Not that I was thinking, what's this, but just this thought came. This must be like heaven. तो मेरे मन में ऐसा विचार आया. ऐसा नहीं कि मैंने सोचा, अचानक विचार आया कि शायद ये स्वर्ग के समान है. Yeah, it's just such an amazing sight.
And so Prabhupada walked almost right past me. तो प्रभुपाद मेरे बाजू से चले गए. And behind, there's Prabhupada with the two girls. Behind them, there's a group of maybe 6 or 7 other devotees, young men and a few other young ladies. और पीछे प्रभुपाद के 6-7 भक्त थे, वो भी नवयुवक थे. And they're having this kirtan. और वो बहुत सुंदर कीर्तन कर रहे थे. And that's what I thought was the little bells. और वो जो कीर्तन का जो आवाज था, मुझे लगा ये घंटियां हैं कुछ तो. So they walked past me into the center of the university, which was just there a few meters away. तो मेरे बाजू से चले गए वो यूनिवर्सिटी के सेंटर में. And there was a small stage set up there. वो यूनिवर्सिटी के उधर एक छोटा स्टेज बनाया था. And they sat on the stage. और वो सब भक्त लोग स्टेज के ऊपर बैठे. And Prabhupada's now sitting in the front. और प्रभुपाद उस आगे बैठे. And Prabhupada started singing Hare Krishna. और प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र गाना शुरू कर दिया. And of course, I was a little familiar, but not very familiar with it. तो मैं ये हरे कृष्ण महामंत्र से इतना परिचित नहीं था. I knew the Hare Krishna mantra because it had been top of the hit parade. तो मैं हरे कृष्ण मंत्र को जानता था क्योंकि वो टॉप ऑफ द पॉप सॉन्ग में आता था. But what is Krishna consciousness? I didn't know. लेकिन ये कृष्ण भावनामृत क्या है मैं जानता नहीं था. So I was listening and I realized, oh, Prabhupada singing. I realized, oh, this is Hare Krishna. तो जब प्रभुपाद गाने लगे तो मुझे समझ में आया, ओ ये हरे कृष्ण है. Yeah. So anyway, then Prabhupada spoke. उसके बाद प्रभुपाद ने कुछ कथा किया. Addressing, there's a whole group of students now, probably 50 or 60. तो उधर बहुत से स्टूडेंट लोग आ गए, तो सारे स्टूडेंट्स लोगों को प्रभुपाद ने एक लेक्चर दे दिया. And you can look, if you've got Prabhupada's books and lectures and things on computer, you can look it up and find that lecture. अगर आप कंप्यूटर में आप देख सकते हैं प्रभुपाद का लेक्चर न्यूजीलैंड में ऑकलैंड में अप्रैल में 1972. Yes, 72 April. It's like 12th or 14th, something like that. So 12th या 14th अप्रैल का लेक्चर जो है आप देख सकते हैं. So he gave really wonderful lecture. So प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर लेक्चर दिया. Because of his accent, it wasn't so easy for me to follow everything. लेकिन प्रभुपाद का जो एक्सेंट बोलने का जो तरीका था मैं इतना समझ नहीं पाया क्योंकि वो भारतीय अंग्रेजी था. मैं सब समझता हूँ. तो मैं इतना समझ नहीं पाया वो भारतीय अंग्रेजी. I followed but not everything. मुझे कुछ समझ में आया लेकिन सब कुछ समझ में नहीं आया. But it made a big impact. लेकिन मेरे ऊपर बहुत ही प्रभाव हुआ उसका. I was a changed person. उससे मैं पूरा परिवर्तित हो गया. And I didn't even realize that this had affected me so much until I moved into the temple a few months later. मुझे ये कितना उसके ऊपर प्रभाव गिरा उसका मैं समझ नहीं पाया. कुछ महीने के बाद मैं मंदिर ज्वाइन कर लिया. And then I realized, wow, what it did to me. It sort of made me a different person. एक प्रभुपाद का दर्शन और कथा और कीर्तन पूरा मेरा जीवन बदल दिया. Yeah, so then a few months later I was in London. तो कुछ महीने बाद मैं लंदन गया था. I went to our temple in central London. तो मैं सेंट्रल लंदन हमारा एक इस्कॉन का मंदिर है उधर गया. And I met the temple president. और उधर मैं टेंपल प्रेसिडेंट से मिला. I don't know if you know Dhananjaya Prabhu. तो आप कितने लोग धनंजय प्रभु को जानते हैं? Yes. He's very nice devotee. बहुत अच्छे भक्त हैं वो. And we were talking and he invited me to come and stay as a guest. तो हम उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझे एक इनविटेशन दिया कि आप आके इधर रहे एक अतिथि के रूप में. Atiti, would you say? अतिथि. Atiti. Yes. And I'm still here.
और मैं तब से अभी तक इधर ही हूँ. हरि बोल, हरि बोल. Little more than 50 years later. 50 years. जय गोल्डन जुबली की जय. हरि बोल. Is that okay? 17th April 1970. 17th it says. Okay. Okay. Hare Krishna. Anyone else? और किसी का कोई प्रश्न है? Yes. So, when you see Srila Prabhupada first time, so how did you feel? What was Srila Prabhupada's actual character? You know, it was all so new. It was difficult to analyze. I hardly tried to analyze. ये उसका एनालिसिस विश्लेषण करना बहुत मुश्किल. मैं इतना सोचा नहीं उसके बारे में. But, you know, the thing was that Indian things at that time, like particularly yoga, meditation, these things, at that time, these were very popular amongst the young people in the Western world. So I would say that, you know, to use the slang, if I may, I thought Prabhupada was really cool. तो उस समय भारतीय योगा मेडिटेशन वगैरह बहुत प्रचलित था विदेशी पाश्चात्य युवा में. और अगर मैं विदेशी स्लैंग यूज करूंगा तो मैं जब पहली बार प्रभुपाद को देखा मुझे लगा प्रभुपाद इज रियली कूल. एकदम. Yeah, really. Yeah, and a number of my friends, they joined full time and became devotees. और मेरे बहुत से दोस्त लोग भी इसको ज्वाइन किए, फुल टाइम भक्त बने. Yeah. So anyway, yeah, cool. The word would be cool. तो Super cool. प्रभुपाद जी एकदम सुपर कूल थे. Okay. Is he become angry anytime? Did I? नो प्रभुपाद कभी गुस्सा किए? With me? प्रभुपाद जी कभी गुस्सा किए? एंग्री? With who? Generally, ऑन एनीवन? On anyone? हाँ. Oh, you mean ever? Ever did Prabhupada ever become angry on anyone? Sometimes. कभी कभी. Sometimes, yeah. Because like Mother Yashoda, she tried to correct Krishna and she really got into it. I got to straighten this boy out. So जैसे कि माँ यशोदा कभी कभी बहुत गुस्सा किए कृष्ण के ऊपर कि इसको मुझे ठीक करना है, उसको सुधारना है. I can tell you a funny little story. मैं आपको एक मजेदार कहानी बताऊंगा. When I first visited India was 1976. मैं पहली बार भारत में आया 1976 में. And I met one sannyasi who was also from New Zealand. और मैं एक सन्यासी से मिला जो भी न्यूजीलैंड से थे. Yeah, because I was from New Zealand. क्योंकि मैं भी न्यूजीलैंड से था, वो सन्यासी भी न्यूजीलैंड से थे. And he was saying, "Oh, you're from New Zealand, really? Me too." तो बोले वो आप न्यूजीलैंड से हैं, मैं भी न्यूजीलैंड से हूँ. And he said, "You know, I just had a conversation with Srila Prabhupada." मैंने जस्ट अभी श्रील प्रभुपाद से कुछ बातचीत किया. And Prabhupada, you know, there are a few devotees there and me, and some American devotees said something a bit silly. और उधर प्रभुपाद थे, मैं था और कुछ भक्त थे और एक अमेरिकन भक्त ने कुछ It's stupid. एक कुछ मूर्खता वश ऐसा एक बात किया. Murky, yeah. And Prabhupada said, Americans, you know. And he turned to this sannyasi from New Zealand and he said, you Americans, you know, sometimes you're too much. तो प्रभुपाद बहुत गुस्सा हो गए और वो जो न्यूजीलैंड के जो सन्यासी थे उनकी तरफ मुड़े और बोले तुम अमेरिकी लोग कभी-कभी बहुत ही. And this New Zealand sannyasi said, well, Srila Prabhupada, you know,
I'm not American. I'm actually from New Zealand. तो वो न्यूजीलैंड के सन्यासी बोले प्रभुपाद मैं अमेरिका से नहीं मैं न्यूजीलैंड से हूँ. And Prabhupada gave him a look, like, so if looks could kill. और प्रभुपाद ने ऐसा उनको देखा कि मानो देखते उनको जला के भस्म कर देंगे. And Prabhupada said, it is the same thing. अगर ये अमेरिकन न्यूजीलैंड ये सब सेम आखिरी में है. But he would get upset when, Hari Sori Prabhu, who worked very closely with Prabhupada, he told me, हरीश्वरी प्रभु जो प्रभुपाद के सेवक थे उन्होंने मुझे बताया if Prabhupada was angry with you, he'd tell you. I go, if अगर भगवान अगर श्रील प्रभुपाद जी आपके ऊपर गुस्सा करते हैं तो आपको बताएंगे. he said, what are you doing? आप क्या कर रहे हैं? But if he was really angry, he wouldn't say anything. अगर वो बहुत ही गुस्सा है तो कुछ बात नहीं करेंगे. And I'm going to close now by telling you another little story. मैं अभी खत्म करने वाला हूँ एक छोटा सा किस्सा कथा बोल के. I think it was 1972. Prabhupada was installing deities in Amsterdam. प्रॉपर 1972 में एम्स्टर्डम में अर्च विग्रह का स्थापना कर रहे थे. But the devotees were doing everything wrong. और भक्त लोग उस प्रोग्राम में सब कुछ गलत कर रहे थे. And Prabhupada step by step was becoming more sort of disturbed. और प्रभुपाद हर एक गलती के साथ साथ वो बहुत गुस्सा उनका बढ़ रहा था. Finally, the last thing is they're going to have a fire yajna. तो आखिर में ये यज्ञ होने का बात था. But there was no fruit or vegetables around the yajna arena. लेकिन यज्ञ के सामग्री के में जो फल रखने के थे तो वो नहीं थे. So Prabhupada said to the president, where is the fruit? तो प्रभुपाद ने उन टेम्पल प्रेसिडेंट को पूछा फल किधर है. So temple president thought, wow, Prabhupada wants the fruit. He ran into the kitchen. तो टेम्पल प्रेसिडेंट को लगा कि प्रभुपाद को फल चाहिए तो तुरंत वो किचन में गए. And he asked the cooks, where's the fruit? Prabhupada wants the fruit. तो किचन में पूछा वो जो रान्ना करते हैं कुकिंग करते हैं उसका कि फल किधर है, प्रभुपाद को फल चाहिए. And the cooks knew that when Prabhupada eats fruit, he likes it cut up like a salad. तो जो किचन में जो कुक थे उनको पता था कि प्रभुपाद को अगर फल चाहिए तो कटे हुए फल चाहिए रहते. So they cut up the quickest fruit salad in ISKCON's history. तो उन्होंने क्या किया फल को लिया सबको कट कर दिया. Like in 2 minutes, this whole big bowl of fruit salad. और 2 मिनट में पूरा फल काट करके लाए. And temple president came out. Prabhupada, here's the fruit. और टेम्पल प्रेसिडेंट आए और प्रभुपाद को ये फल दिए कटे हुए. But the fruit is meant to be whole. लेकिन यज्ञ के लिए तो पूरे फल चाहिए थे और ये उन्होंने कटे हुए फल लाए थे. So Prabhupada looked at the fruit salad. तो प्रभुपाद ने देखा ये फ्रूट सैलेड लाया उन्होंने. And he didn't say anything. प्रभुपाद कुछ बोले नहीं. He just looked away प्रभुपाद जस्ट दूसरी जगह देखे. to the other side. On the side, standing right next to his Vyasasan, was a hippie boy who was a bit of a devotee. तो प्रभुपाद के व्यासन के पास में एक हिपी लड़का था जो थोड़ा थोड़ा भक्ति में आ रहा था. He had long hair, उसका बहुत बड़ा बाल था but he had japa beads. लेकिन उसके हाथ में जप माला था. He's standing there right next to Prabhupada. और
प्रभुपाद के जस्ट बाजू में खड़ा था वो, chanting on his beads और वो भगवान का नाम जप कर रहा था, and watching all these things happen और वो हिप्पी सब देख रहा था, and seeing Prabhupada get more and more angry. और वो देख रहा कि स्वामी प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा बढ़ रहा है उनका, And finally the fruit salad came. और जब फाइनली वो फ्रूट सैलड आ गया, And Prabhupada just looked across, looked away. लेकिन प्रभुपाद ने दूसरी जगह देख लिया, And this boy is standing like here. और वो जो लड़का था, हिप्पी लड़का, वो उधर खड़ा था, And he just leaned over to Srila Prabhupada. और वो लड़का प्रभुपाद की तरफ झुक गया. He said, Srila Prabhupada, just chant Hare Krishna. झुक के प्रभुपाद को बोला, श्रील प्रभुपाद सिर्फ अब भगवान का नाम जप कीजिए. And Prabhupada looked at him. और प्रभुपाद ने उसके तरफ देखा, And Prabhupada picked up his japa bead प्रभुपाद ने अपना माला ले लिया, and started chanting Hare Krishna. और प्रभुपाद started chanting हरे कृष्ण. Because there's a saying, you can take gold from a dirty place. आप सोना भी गंदगी से उठा सकते हैं. Because this boy, he was not like a real practicing devotee. वो जो हिप्पी था वो इतना अच्छा भक्त नहीं था एकदम पक्का, लेकिन ठीक है. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Oh, Gaya. can we sing Damodar Ashtakam and offer that, Oh. and then we can. We can. You have printed pages. हाँ Printed pages है. हाँ दे सकते हैं. Oh, I see. Damodar Okay, Ashtakam. okay. हिंदी इंग्लिश बंगाली बात की आपको जिस भाषा में चाहिए ले लो, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली है. Who will sing?